Ram Om Shri Ram Jai Ram Jai Jai 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 Ram Om. Jai Shri Ram. A very warm welcome to all Jai of Shri you Ram. to today's Sundarkaand Recital. New Year's Eve Sundarkaand Recital. A very warm and cordial welcome to you all. And I'm so happy that you all could join in the satsang today. And I'm looking forward to the recitation of the Sundarkand. It's a, it's a blessing indeed to have the opportunity to recite and take the Lord's name, recite from the scriptures. We are really blessed, and I'd like to thank each and every one of you for joining. Um, I will request everyone to please keep their mic and camera muted during the satsang, and please unmute when you are asked to do so. And as soon as you are finished with your section, please put your mic off so that there's no feedback. That's the only reason I'm requesting this. And I do have a draft program drawn up. And in case I get disconnected, I will request Chiman Bhai to please conduct the satsang for that section until I'm back, and if he can please do so. And then, even though I got the draft program, there may be a few changes, so please bear with me. And I will come on the mic after each set to announce, who will be coming on for the next set, so you can be in preparation. I know sometimes a reminder is needed because we are so absorbed in the recitation. So I like to come on the mic and announce who will be doing the next set. So thank you once again, all of you, for joining. I will now do the Sumiran, and then I will do the Sanskrit verses of the Sundarkand. Oh, and one more request, please.
when you are about to start your set of chopayas, I'm talking to the reciters, if you can just start with your chorus line, if you wish to. I'm not saying you have to do the chorus line, but if you'd like to do it, you're most welcome to do so at the beginning of your section of the chopai, and you can do so another line of it after your complete set of chopais. Because if we have additional chorus in between the lines of the chopai, then the recitation will be going for much longer, and our program will be, you know, elongated or drawn more, dragged further on. So we like to stick to time and finish off by midnight. Thank you once again, everyone, and thank you for joining and being here. ॐ जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करिवर बदन करऊ अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदना मूक होई बाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गहना जासु कृपा सुदयाल द्रवौ सकल कलिमल दहन नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारिज नयन करौ सुमम उरधाम सदा क्षीर सागर शयन कुन्द इंदु समदेह उमारमन करुणा अयन जाहि दीन परनीह करौ कृपामर्दनमयन बन्दौ गुरुपद कञ्ज कृपा सिन्धु नररूप हरि महामोहतमपुञ्ज जासु बचन रवि कर निकर श्री सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय. I will do the Sanskrit shloks. Thereafter, I will request Anika ji to please recite from the Doha 1 and 2. And then after that, Auntie Sushila, please do 3, 4, and 5. And Nishana Pandey, please do the English summary for that section. Thank you. ॐ श्रीगणेशाय नमः श्रीजानकीवल्लभो विजयते श्रीरामचरितमानस सुन्दरकाण्ड शान्तं शाश्वतम् अप्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदं ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिम् नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवनिर्भराममी कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि. जय श्रीराम. जय श्री राम। हो राम जमवंत के बचन सुहाए रामा, हो राम सुनि अनुमंत हृदय अति भाए रामा,
हो राम तब लगी मोहि पर केहू तुम भाई रामा। हो राम सह दुख कंद मूल फल खाई रामा। हो राम जब लगी आवे सीत ही देखी रामा। हो राम होई काजु मोहि करश विशेषी रामा। हो राम यहाँ कही नाई सब ही कहु माता रामा। हो राम चलहु रघुशीष हिष धरि रघुनाथा रामा। हो राम सिंधु तीर एक भुधार सिंध सुंदर रामा। हो राम कौतुक कोधि चरहु उपारे रामा। हो राम बार बार रघुबीर सभारी रामा। हो राम तरको पवन तनये बल भारी रामा। हो राम जो गिरी चरण दे हनुमंता रामा। हो राम चलऊ सोगा पा पातल तुरंता रामा। हो राम जिमि अमेघ रघुपति कर भाना रामा। हो राम यही बंती चलऊ हनुमाना रामा। चले निधि रघुपति धूत बिचारी ते मेनक होई प्रशमहारी। हनुमान ते ही परसार कर पुनि किन्ह प्रणाम। राम जा राम काज किन बिनु मोहि कहा विश्राम। श्रियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। जात बन सुत देवन देखा जान कहो बल बुद्धि विशेषा। सुर से नाम हिन के माता पटहिन आई कही तेहि माता। आज सुरन मोहि दीन आहरा सुनत बचन कह पवन कुमारा। राम काज करि फिर में आवो सीता कही सुध प्रभु ही सुनावे। तब तब बदन बेटी आई सत्य कहो मोहि जान माई। कवन हो जनत दे नहीं जाना घास सीना मोहि कहाहु हनुमाना। जो जन भारी तहि बदनु पसारा कपितनु कीध दुगुना विस्तारा। सो रहा जो जन मुख तेहि छायाऊ तुरत पवन सुत विसित भयऊ। जास जास सुरसा बदनु बरावा तासु दून कपि रूप दिखावा। सत जो जन तेहि आनन कीन्हा अति रघु रूप पवन सुत लीन्हा। बदन पाइठी पुनि बरहु आवे मग विधातहि सिरु नावा। मोहि सुरन जेहि लगी पेठावा बुद्धि बल मर मर मुँह थोर में पावा।
सियावर रामचंद्र की जय। राम काज सब किनर किन्ही रघु तुम बल बुद्धि निधाना। आशीष देहि गई सो हरषि चलहु हनुमान। श्रियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। ओ राम निशिचर एक सिंधु मोह राही रामा। Sorry, only two there, Anika Ben. Sushila Ben, Oh, you go ahead now. 3 to 5. जय श्री राम। हनुमान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है आगे भी निभा देना। निश्चर एक सिंधु महु रही, करि माया नभ के खग गहई। जीव जंतु जे गगन उड़ाई, जल बिलो की तिनके परिचाई। कहई चाह सक सो न उड़ाई, यही विधि सदा गगन चर खाई। सोई छल हनुमान कहा कीन्हा, तासु कपटु कपि तुरत ही छीना। ताहि मारी मारुत सुत बीरा, बारिधि पार गयो मति धीरा। कह जाई देखी बन शोभा, गुंजत चंचरीक मधु लोभा। नाना तर फल फूल सुहाई, खग मृग बृंद देखी मन भाए। शैल विशाल देखी एक आगे, तापर धाई चढ़ऊ भय त्यागे। उमान कछु कपि कै अधिकाई, प्रभु प्रताप जो खालहि खाई। गिरि पर चढ़ी लंका तेहि देखी, कही न जाई अति दुर्ग विशेषी। अति उतंग जल निधि चहु पासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरा एक्सक्यूज मी सुंदरायति नाघना। चहु हट हट सुभट बीति, चारुपुर बहु विधि बना। गजबाची खच्चर निकर पदचर, रत भरुतिनि को गने बहु रूप निशिचर। जूत अति बल सेन बरनत नहीं बने, बन बाग उपबन वाटिका सर खूप बापी। सोहहि नर नाग सुर गंधर्व कन्या, रूप मुनि मन मोहहि। कहु माल देह विशाल शैल समान, अति बल गरजहि। नाना अखार न बिरही, बहु विधि एक एकन तरजही। करि जतन भट कोटि न बिकट तन, नगर चहु दिसि रचहि। महु महिष मानुष धेनु खर अजकल, निसाचर बचहि। यही लागी तुलसी दास इनकी कथा, कछु एक है कही। रघुबीर सर तीरथ शरीर नहीं, त्यागी गति पे है सही। पुर रखवारे देखी बहु कपि मन कीन विचार। अति लघु रूप धरो निशिचर नगर परोस पैसार। मसक समान रूप कपिधारी, लंक ही चले सुमिर नर हरि।
नाम लंकिनी एक निश्चरी, सो कहा चल सी मोहि निंदरी, जाने ही नहीं मर मूसट मोरा, मोर आहार जहाँ लगी छोरा, मुटिका एक महाकपि हनी, रुधिर बमट धरनी धन मानी, पुनि संभारी उठी सोलंका, जोरी पानी कर विनय सशंक, जब रघु रावणहि ब्रह्म बर दीना, चलत बिरंची कहाँ मोहि छीना, विकल हो सितै कपि के मारे, तब जान सुनि सिचर संघारे, तात मोर अति पुण्य बहुता, देखहु नयन राम कर दूता, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरि अतुल एक अंग, तूल न ताहि सकल मिली, जो सुख लव सतसंग, प्रभीसि नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, गरल सुधारि पुकारहि मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई, करुर सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा करि चितवा जाहि, अति लघु रूप धर्यो हनुमाना, पैठा नगर सुमिर भगवाना, मंदिर मंदिर प्रति करि सोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा, गयहु दसानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही, शयन किए देखा कपि तेहि, मंदिर महु न दीखिबै देहि, भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तहा भिन्न बनावा, रामायुध अंकित गृह, शोभा बरनि न जाय, नव तुलसी का बृंद तहा, देखि हर्ष कपि राय, सियावर रामचंद्र की जय, शरणम शंकर हरिओम, जय श्री राम। Jai Shri Ram. The three Sanskrit slokas of invocation at the commencement of the Sundarkaand gives us a clue of the events that will be described in this Kand. The two shlokas dedicated to Sri Ram end with a plea to the Lord for the boon of intense devotion to his lotus feet. The third shloka is dedicated to Hanumanji, where he is described as a virtuous, wise, powerful, a protector of the good and destroyer of evil. Thereafter, the writer Tulsi Dasji describes Hanumanji's journey to Lanka after assuring his companions to take heart and rest assured of his success in the mission. This confidence of Hanumanji's springs from his complete faith and surrender to God and his total egolessness. The journey of Hanumanji is not without trials and tribulations, indicating to us that the path of spirituality has many tests. The first obstacle faced by Hanumanji was Sursa, the mother of serpents. As soon as Sursa became convinced of Hanumanji's strength, skill, and wisdom, she blessed Hanumanji and allowed him to resume his journey. When the demoness Sihika tried to kill Hanumanji by stealth and trickery, Hanumanji killed her with a single
blow. When Hanumanji reached the shores of Lanka, he was prevented from entering the city by Lankini, who threatened to devour him. Hanumanji knocked her down with a single blow, which transformed her entire attitude. She praised Hanumanji and extolled the value of satsang with such a great spiritual being. She blessed Hanumanji and allowed him to pass into Lanka. Hanumanji searched all the buildings in Lanka but could not find Mother Sita in any of them. Hanumanji was fascinated when he saw the house of Vibhishan, which was unlike any other building in Lanka. The symbols painted on the walls and the tulsi plants in the courtyard indicated to him that this was a residence of a devotee. Jai Shri Ram. Jai Shri Ram. Big thank you to Anika ji, Auntie Sushila, and Mishana Ben. We have divided the sets of 5 into 2 dohas and 3 dohas. The first reciter will do 2, and the second reciter will please do 3, and then we have the summary after that. And please wait for me to make the announcements after each set. Thank you. So now for the next set here, that is Doha 6 and 7. Anila ji, please do that. And Auntie Shamla, please do Dohas 8, 9, and 10. And I will request Akshay to please do the summary. Akshay Pandey. Thank you. Anila ji? Sorry. तब हनुमंत कहे सब राम कथा निज नाम सुनत जुगल तन पुनिक मन मगन सुमिर Sorry, गुण after Doha 5. After Doha 5, the Chopai following that, please. Oh, okay. Sorry. लंका लंका निशिचर निकर निवासा इहा कहा सजन कर पासा मन महु तरक करी कपिलागी तेहि समय विभीषण जागा राम राम तेहि सुमिरन कीना हृदय हर्ष कपि सजन न चीना यही सन हाथी करिहहु पहचानी साधु साधु देहो न कारज हानि वृप रूप धरि बचन सुनाई सुनत विभीषण उठी तह आई करी प्रणाम पूछे कुशलाई नृप कहु निज कथा बुझाई ते तुम हरि दसानन मह कोई मोरहि ते प्रीति अति होई कि तुम राम दीन अनुरागी आयहु मोहि करन बर भागी तब हनुमंत कहे सब राम कथा निज नाम सुनत जुगल तन कमन मगन सुमिर गुण ग्राम सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय उमंग पुरम मंगल भवनय मंगलहारी रामा पुरम द्रहु सुदशरथ अजर बिहारी रामा पुरम सुनहु पवन सुत रह हमारी रामा पुरम जिमि दस नही महु जीव
बिचारी रामा। हो राम तात कबहु मोहि जानी अनंत रामा। हो राम करिहहि कृपा बान कुल नाता रामा। हो राम तामस तनु कछु साधान नाही रामा। हो राम प्रीति न पद सरोज मन माही रामा। हो राम अब मोहि भरोस हनुमंता रामा। हो राम बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता रामा। हो राम जो रघुबीर अनुराग कीन्हा रामा। हो राम तो तुम मोहि तर सुहति दीन्हा रामा। हो राम सुनहु विभीषण प्रभु की किरी किरीति रामा। हो राम करहि सदा सेवक पर प्रीति रामा। हो राम कहु कवन में परम कुलीना रामा। हो राम कवि कंचन सब ही विधि हीना रामा। हो राम प्रात लीऊ जान हमारा रामा। हो राम तेहि दिन ताहि न मिल हारा रामा। हो राम मंगल भवनय मंगलहारी रामा। हो राम द्रहु सुदशरथ अजर बिहारी रामा। असमय अधम सखा सुनो मोहु पर रघुबीर। कीन्ही कृपा सुमिरि गुण बार बिलोचन नीर सियावर रामचंद्र की जय। हो राम मंगल भवनय मंगलहारी रामा। Thank you. Sorry. Okay, thanks. Sorry. जय श्री राम। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले हनुमान के बिना। जान तू अस स्वामी बिसारी, फिर ही ते को काहे न हो ही दुखारी। यही विधि कहत राम गुण ग्रामा, पावा अनिर्बच्चे विश्रामा। पुनि सब कथा विभीषण कही, जेहि विधि जनक सुता तह रही। तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता, देखि चहाऊ जानकी माता। जुगति विभीषण सकल सुनाए, चले उपवन सुत विदा कराई। करी सोई रूप गए पुनीत हावा, बन अशोक सीता रहा जहावा। देखी मन ही महु कीन्ह प्रणामा, बैठे ही बीती जात निसि जामा। कृष तनु शीस जटाएक बेनी, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले हनुमान के बिना। निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन। परम दुखी भा पवन सुत, देखी जानकी दीन। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले हनुमान के बिना। तरु पल्लव महु रहा लुकाई, करे विचार करी का भाई। तेहि अवसर रावण तहाँ आवा, संग नारी बहु किए बनावा। बहुविधि खल सीतहि समुझावा, साम दाम भय भेद दिखावा। कह रावण सुनु सुमी, कह रावण सुनु सुमुखी सयानी।
मंदोदरियादि सब रानी, तव अनुचरि करऊपन मोरा, एक बार बिलोक मम ओरा। तृण धरि ओट कहती बेदेही, सुमिरि अवधपति परम सनेही। सुनु दस मुख खद्योत प्रकाशा, कबहु की नली निकरई बिकासा। अस मन समझू कहती जानकी, खल सुधि नहीं रघुबीर बान की। सट सुने हरि जान ही मोही, अधम नीलज्ज लाज नहीं तोई। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले हनुमान के बिना। आप हो सुनी खद्योत सम, राम ही भानु समान। बारुष बचन सुनि काढ़ियसी, बोला अति खिसियान। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले हनुमान के बिना। सीता ते मम कृत अपमाना, कटिहउ तव सिर कठिन कृपाना। नाहिता संपदी मानु मम बानी, सुमुखी होती नता जीवन हानि। श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु भुज करि कर समदस कंदर। सो भुज कंठ की तव असि घोरा, सुनु सट अस प्रवान मन मोरा। चंद्रहास हर मम परितापम, रघुपति बीरहा अनल संजातम। शीतल निशित बहासी बरधारा, कह सीता हरो मम दुख भारा। सुनत बचन पुनि मारन धावा, मयंत नया कही नीति बुझावा। कहे सि सकल निशिचर नहीं बोलाई, सीत ही बहु विधि त्रास हो जाई। मास दिवस महु कहाँ न माना, तो में मार बिकाड़ी कृपाना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले हनुमान के बिना। भवन गयु दस कंदर, इहा पिसाचिनी वृंद। सीत ही त्रास दिखावही, धरहि रूप बहुमंद। सियावरे रामचंद्र की जय, शरणम शंकर हरि ओम। जय श्री राम। Jai Shri Ram. On seeing the house of Vibhishan, Hanumanji was amazed that a pious man could be staying in the midst of demons. It was daybreak, and Hanumanji assumed the form of a Brahmin and went to meet Vibhishan, who was arising from his slumber with the repetition of Sri Ram's name in prayer. After exchanging courtesies, Vibhishan inquired after Hanumanji's identity, exclaiming that his heart was filled with exceeding love at his sight. Hanumanji told him all about Sri Ram and revealed his identity as well. Vibhishan described his situation in Lanka as being similar to the tongue that lives in the midst of the teeth. Vibhishan was yearning for God's grace, which he felt he would not get since he was unworthy of it. Hanumanji assured Vibhishan of the constant affection of the Lord for his devotees. With tearful eyes, he recalled how even he, as a monkey, had received the Lord's grace. Thus, speaking together of the Lord's wonderful attributes, both Hanumanji and Vibhishan derived unspeakable solace. Truly, what can be more satisfying to a devotee than to speak and hear about the glories of God? Finally, Hanumanji learned from Vibhishan that Mother Sita was kept by Ravan in the Ashok grove. He assumed a minute form and went straight there unobserved.
He saw her sitting weak and sad under the Ashok tree, continuously repeating Sri Ram's name. He mentally bowed to her and concealed himself among the leaves of the tree, wondering how he should approach her, considering her present delicate state of mind. Just then Ravan arrived there, gaily adorned and accompanied by his entourage of women. He tried to persuade Mother Sita to marry him by inducements of wealth and power. He even offered to make Mandodari his chief queen, as well as the other queens her handmaids. Mother Sita responded by flatly rejecting Ravan's advances, saying that a lotus flower will only blossom at the sight of the sun and not the glow of a firefly. She called Ravan a vile and impudent rogue who should be ashamed of himself for carrying her off when she was alone and unprotected. When Ravan heard himself compared to Sri Ram as a glowworm to the sun, he became furious and, drawing his sword, rushed forward to kill her. It was Queen Mandodari who intervened and pleaded with Ravan not to take upon himself the unpardonable sin of killing an unarmed and helpless woman. Ravan gave Mother Sita an ultimatum to consent to be his wife within 1 month, failing which he would behead her. He instructed a troop of demonesses to harass and intimidate Mother Sita in every way in order to persuade her to become his wife, and he returned with his entourage to his palace. Jai Shri Ram. Jai Shri Ram. Thank you very much, Auntie Anila, Auntie Shamla, and also Akshay. It was really lovely. Thank you. Um, I'm sorry if I've created some confusion, but please, the first reciter do 2 dohas and the next person do 3 dohas. I'm sorry once again if there has been any confusion. Also, I have been working on the program at the last minute, so I do apologize. We stopped at Doha 10. I will ask Suren Bhai, if he's online, to please do uh, 2 dohas. Thereafter, Sunita Behin, please recite the next 3. And Shreya, please do the summary. Shreya Singh. Thank you. Suren Bhai may be unable to connect because Suren Bhai, Bhim Bhai, please recite. That is after Doha 10, Bhim Bhai. Bhim Bhai, I saw your mic coming on. Jai Shri Ram. Jai Shri Shri Ram. Go ahead. Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. Trijita Naam Rakshasi Eka Ramacharan Rati Nipun Viveka Saban Bol Sunayasi Sapana सीता ही से ही करो हित अपना सपने बानर लंका जारी जातुदान सेना सब मारी खर अरुद नगन दस सीसा मुंदित सिर खंडित भुज बीसा एहि विधि सो दक्षिण दिशि जाई लंका मन विभीषण पाई नगर फिरी रघुवीर दुहाई तब प्रभु सीता बोली बताई यहाँ सपना में कहु पुखारी होई सत्य गए दिन चारी
तासु वचन सुनी ते सब डरे, जनक सुता के चरणनी परी। जाता गई सकल तब सीता कर मन सोच, मास दिवस बीते मोही मारही निश्चर पोच। रिचिता सन बोले बोली कर जोरी, मातु विपत्ति संगनी तेहि मोरी। तजऊ देह करु बेगी उपाय, दुस्सह विरह अब नहीं सही जाई। आनि हाथ रचु चिता बनाई, मातु अनल पुनि देई लगाई। सत्य करही मम प्रीति सयानी, सुनई के श्रवण सूल सम पानी। सुनत वचन पद गई समुझायसी, प्रभु प्रताप बल सुजसु सुनायसी। निसिना अनल मिल सुनु सुकुमारी, अस कई सो निज भवन सिधारी। कहा सीता विधि बा प्रतिकूला, मिलहि न पावक मितहि न सूला। देखियत प्रगत गगन अंगारा, अवनि न आवत एक तारा। पवन पवक पवक में शशि श्रवण न आगे, मानु मोहि आनी हत भागी। सुने विनय मम वितप अशोका, सत्य नाम करु हरु मम शोका। नूतन कुशलय अनल समाना, देई अग्नि जनि करई निदाना। देखी परम विराकुल सीता, सोचन कपई कलप सम पीता। कपि कपि कर हृदय विचार, दिन्ही मुद्रिका तारी तब। सुन अशोक अंगार, दिन हर्ष उठि कर गहे गयऊ। श्यावर राम चंद्र की जय, शंकर हरिओम। तब दे Thank you, Bhim Bhai. Ram, sorry, Ram, Siya Ram, Jai Jai Ram. तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। चकित चित तव मुद्री पहिचानी, हर्ष विषाद हृदय अकुलानी। जीती को सकई अजय रघुराई, माया ते असी रचि नहीं जाई। सीता मन विचार कर नाना, मधुर बचन बोले हनुमाना। रामचंद्र गुण बरनेला लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा।
लागी सुने श्रवण मन लाई, आदि हुते सब कथा सुनाई। श्रवणामृत जेहि कथा सुहाई, कही सो प्रगट होती किन भाई। तब हनुमंत निकट चली गयो, फिर बेटी मन विस्मय भयउ। रामदूत में मातु जानकी, सत्य सपथ करुणा निधान की। यह मुद्रिका मातु में आनी, दीन्ही राम तुम कहा सही दानी। नर बानर ही संग कहु कैसे, कही कथा भई संगति जैसे। कपि के बचन सप्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास। जाना मन क्रम बचन यह, कृपा सिंधु कर दास। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। हरि जन जानी प्रीति अति गारी, सचल नयन पुल कावली बारी। भूरत बिरह जलति हनुमाना, भयहु तात मोह कहु जल जाना। अब कहु कुशल जाऊ बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन खरारी। कोमल चित कृपाल रघुराई, कपि कही हेतु धरी निटुराई। सहज बानी सबक सेवक सुखदायक, कबहुक सुरति करत रघुनायक। कबहु नयन मम शीतलताता, होहि निरखी श्याम मृदु गाता। बचनु न आव नयन भरे बारी, अहह नाथ होई निपट बिसारी। देखी परम बिरहा कुल सीता, बोला कपि मृदु बचन बिनीता। मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, तव दुख दुखी सुकृपा निकेता। जनि जननी मानहु जिय ऊना, तुम्हते प्रेम राम के दूना। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। रघुपति कर संदेशु अब, सुन जननी धरि धीर। अस कही कपि गद गद भयउ, भरे बिलोचन नीर। राम सिया राम जय जय राम। कहेहु राम वियोग तव सीता, मोकहु सकल भय निपरीता। नव तरु किसले मनहु सानु, काल निसा सम निसि सुनीत भानु। कुबले बिपिन कुतबन सरीसा, बारिद तपत तेल जनु परीसा। चोहित रहे करत ते पीरा, उरग श्वास सम त्रिविध समीरा। कहेहु ते कछु
दुख घटी होई, काहि कहो यह जान न कोई। तत्व प्रेम कर मम अरुतारा, जानत प्रिया एक मनु मोरा। सो मनु सदा रहत तोहि पाही, जानु प्रीति रसु इतने माही। प्रभु संदेशु सुनत बेदेही, मगन प्रेम तन सुति नहीं तेही। कह कपि हृदय धीर धरु माता, सुमिरु राम सेवक सुख दाता। उर आनहु रघुपति प्रभुताई, सुनि मम बचन तजहु कदराई। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। Jai Shri Ram. Whilst the demonesses were intimidating Mother Sita, a demoness by the name of Trijata came and stopped them. She told them of her dream in which a monkey came and burnt the city of Lanka, and of a terrible battle in which Ravan was killed and the entire demon army destroyed by Sri Ram. She proclaimed her belief that the dream would come true in a few days. The demonesses were terrified. They fell at the feet of Mother Sita and then dispersed in various directions. In gratitude, Mother Sita said to Trijata, "Mother, you are my only companion in adversity." She then pleaded to Trijata to put up a pyre and set fire to it so that she may end her life. She preferred to become a sati than be killed at the hands of Ravan. Trijata then clasped Mother Sita's feet and comforted her by recounting the majesty, might, and glory of Sri Ram. In response to Mother Sita's request, she merely made the excuse that no fire can be had at night, with the hope that Mother Sita could change her mind by the morning. Trijata then left for her residence. Mother Sita continued her lamentation, saying that of the moon and all the stars in the sky, not a single spark of fire comes to end her wretchedness. She then addressed the Ashok tree, below which she was sitting, asking it to be true to its name and take away her sorrow by supplying her with fire. Hanumanji, who was hidden amongst the leaves of the tree, saw this as his opportunity and dropped down the signet ring that was given to him by Sri Ram. Mother Sita thought that the Ashok tree had responded to her prayer and thrown down a spark. She sprang up and took it in her hand. She recognized the charming ring with the name of Sri Ram most beautifully engraved on it. She wondered how the ring got there, knowing that none can conquer her invincible lord and take away his ring, and neither could the ring be duplicated. When Hanumanji saw that Mother Sita was confused and agitated, he began to relate the glories of Sri Ram. Mother Sita's grief vanished as she listened to his sweet and melodious words and expressed her desire to see the narrator. When Hanumanji sprang down next to her, she was startled and turned away from him. Hanumanji tried to assure her that he was a messenger from Sri Ram and that he had brought the ring. At first, Mother Sita did not believe him, saying that how could there be this association between a man and a monkey? Hanumanji then explained the circumstances in which he met the Lord and was deployed as his messenger. Hanumanji's affectionate words gained Mother Sita's trust, and she recognized him to be a servant of the all-merciful Lord in thought, word, and deed. She inquired from Hanumanji about the welfare of Sri Ram and Lakshman, and wanted to know why the tender-hearted and compassionate Lord had left her to suffer for so long. Then, with tears in her eyes, she asked Hanumanji if she would ever be able to see the Lord again. Seeing her distress due to her separation from her Lord, Hanumanji spoke to her in soft and polite accents. He said that Sri Ram and Lakshman were both doing well, except for the fact that the all-merciful Lord was sorrowful because of her sorrow. Hanumanji assured her that Sri Ram loved her twice as much as she loved him.
Hanumanji then related Sri Ram's message, which described the agonizing pain he suffered as a result of their separation. As she heard her Lord's message, Mother Sita was so absorbed in love that she lost all consciousness of her body. Hanumanji then reassured her that Sri Ram would definitely come to rescue her and destroy the demon race. Jai Sri Ram. Jai Shri Ram. Thank you very much, Bhim Bhai, Sunita Behen, and Shreya. The next set, which will be from Doha 15 to 20. Molly Didi, please start from the Doha itself, Doha 15, and please do 2 verses, and then Dey Bhaiya, please do the next 3. And I will request Nivasha Shah to please do the summary for that section. Thank you. जय श्री राम। निशिचर निकर पतंग सम रघुबनि बान कृसान जननी हृदय धीर धरु चरे निशाचर जानू जो रघुबीर होति सुधि पाई करते नहीं विलंब रघुराई राम बान रब उए जानकी तंबरूत कहा जातु धान की अब ही मातु में जाऊ लवाई प्रभु आय सुनहि राम दुहाई कछुक दिवस जननी डरु धीरा कपिन सहित आय ही रघुबीरा निशिचर मारि तो ही ले जही तेन पुर नार दादि जसु गयहि है सुत कपि सब तुमहि समाना जातु दान अति भट बलवाना मोरे हृदय परम संदेहा सुनि कपि प्रगट कीन निज देहा कनक पुडारकार शरीरा समल भयंकर अति बलबीरा सीता मन भरोस तब भयहु पुनि लग रूप पवन सुत लयहु सुनो माता शाखा मृग नहीं बल बोधि विशाल प्रभु प्रताप ते गरु रही खाई परम लघु ब्याल मन संतोष सुनत कपिबानी भक्ति प्रताप तेज बलसानी आशीष दीन राम प्रिय जाना हो तात बलशील निदाना अजर अमर गुण निधि सुत हो करहु बहुत रघुनायक चोहु करहु कृपा प्रभु अस सुनिकाना निर्भर प्रेम मगन हनुमाना बार बार नायसी पद सीसा बोला बचन जोरी कर कीसा अब कृत कृत्य भयउ मैं माता आशीष तब अमोघ विख्याता सुनहु मातु मोहि अतिसिय भूखा लागी देखी सुंदर पल रूखा सुन सुत करहि विपिन रखवारी परम सुभद्र जनी चर भारी तिन कर भय माता मोहि नाही जो तुम सुख मानो मन माही श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम देखी बोधि बल निपुण कपि कहे उजान की जाओ रघुपति चरण हृदय धरी तात मधुर पल खाओ। जय 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 हनुमान जय 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 हनुमान
जय 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 हनुमान, जय 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 हनुमान। चले तू नहीं सिरुपट भागे, फलकासी तरु तो रही लागे। रहा तहाँ भाव भात रखवारे, कछु मारसी कछु जाही पुखारे। नाट एक आवे कपि भारे, तेया शुक भांति के उझारे। खासी फल और विपत उपारे, राचक मरदी मरदी में धारे। सुन रावण पाती भाटे नाना, तिनहि देखि घर जहु हनुमाना। सब रजनी चर कपि संघारे, कही पुकाराट कछु अध मारे। पुनि पाटहु तेई अक्षय कुमारा, चले संग लही शुभते अपारा। आवत देखी बिटप कही थर जा, ताहिनी पति महाधुनि घर जाम। कछु मारसी कछु मरदसी, कछु मिले सी धरी जोरी। कछु पुनि जाहि पुकारे, प्रभु मर कट भल भोरी। सुन सुत भाट लंके केसरी साना, पाटसी मेघनाथ भलवाना। मारसी जान सुट भंते सुटाही, देखी कपी कहाँ कर आही। चले इंद्रजूत अतुलुत जाधो, चूधा भंडु निधान सुनि उपजा क्रोधा। कपि देखे धरो भाते आवा, कत काही घर जे और धावा। अति विशाल उतरु एक उपारा, भीरत कीन लंकेश कुमारा। रहा महाभारत ताके संगे, गही गही कपि मर्ज निज अंगे। तिनहि निपाति ताहि सन भाजा, फिर जुगल मानहु घराजा। मुंटिक मारी चतुतारहु जाही, ताई एक चन्य मूर्छाही। उठी बहोरी कीन हसु बहु माया, जीत न जाही अभाजन जायम। ब्रह्मास्त्र तेहि साधन, कपि मन कीने विचार। जो न ब्रह्म सार मानहु, महिमा मित्य अपार। ब्रह्म बान कपटही है मारा, पातहु भार का तु कह संघारा। तेहि देखे कपि मूर्छत भायो, नागे पास भंडे सिलहि गय हो। जासु नाम जप सुनो भवानी, भव बंधन कटी नर ज्ञानी। तासु दूत के भंडु तरु आवा, प्रभु कारज लगी कपि भंडावा। कपि भंडन सुनि निश्चर ढाई, काटुक लागी सभे सब आही। दस मुख सभे देखी कपि जाही, कहीं न जाई कछु अति प्रभु ताही। कर जोरे सुर दिस पे विनीता, ब्रिकट बिलोकट सकल सबीता। देख प्रताप न कपि मन शंका, जिमि आहि गान महु गरुड असंका। कपि बिलोक धासाहने, बिहासी कही दुर्भार। सूत भाद सुरति कीन पुनि, उपजा हृदय विषाद। सिया बज रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। जय श्री राम। Jai Shri Ram. Hanumanji asked Mother Sita to wait patiently for some days, more assuring her that Shri Ram will destroy the demon host and rescue her shortly. Mother Sita expressed some misgivings on the matter, saying that all the monkeys must be tiny like him, whereas the demons were huge and mighty warriors. On hearing this, Hanumanji revealed his natural form, colossal as a mountain of gold, terrible in battle, possessing great strength and full of valor. Mother Sita then took comfort in her heart, and Hanumanji resumed his diminutive appearance. He said to Mother Sita that monkeys possess neither great strength or intelligence, but due to the grace of the Lord, they have become brilliant, mighty, and invincible.
Hanumanji's words reminded Mother Sita of Sri Ram's majestic glory and power, and she felt gratified at heart to see Hanumanji's boundless devotion. She gave him her blessing, saying, "You may be a repository of strength and of virtue, dear child. May you ever remain immune from old age and death, and may Sri Ram shower his abundant grace on you." The moment Hanumanji heard the words, "May the Lord shower his abundant grace on you," he was utterly overwhelmed with emotion. Again and again he fell at her feet and said, "I have now accomplished all that I had to accomplish, dear mother, for your blessings can never fail." Then Hanumanji said that he was extremely hungry and wanted permission to eat fruit from nearby trees. Mother Sita was apprehensive because the orchard was guarded by the most valiant and mighty demons. But Hanumanji said he was not afraid of them since he had her blessings. Seeing Hanumanji perfect in strength and wisdom, Mother Sita gave him permission to enjoy the luscious fruit with his heart fixed on Sri Ram's feet. As Hanumanji began to eat the fruit and break down the trees, the guards tried to stop him. He beat them severely, and those who remained alive took flight and went to Ravan. When Ravan heard about what had happened, he sent a number of his champions under the leadership of his son Akshay Kumar to kill Hanumanji. Hanumanji killed Akshay Kumar and crushed his warrior companions. A few that survived went back and reported the incident to Ravan. Ravan flew into a rage when he heard of his son's death and sent his eldest son, the mighty Meghna, with a contingent of warriors, with the instructions that Hanumanji must be captured and brought before him. In spite of his rage, Ravan was curious to see a monkey that possessed such great power and also wanted to ascertain where he had come from. Meghnad waged a furious battle with Hanumanji, but Hanumanji proved himself to be superior in strength and valor. Finally, Meghnad resorted to the ultimate weapon, the Brahmastra, in order to overcome Hanumanji. Even though Hanumanji knew that he had received a boon from Lord Brahman himself, that the Brahman Astra will not be able to harm him, he nevertheless submitted to the weapon out of concern and respect for Lord Brahman's prestige and infinity glory. Hanumanji allowed himself to be captured and taken to Ravan's court. He observed that even the gods and regents of courtiers should meet, join palms in front of Ravan with, with superb glory baffled description. Everyone appeared terrified of Ravan, but Hanumanji was no more disturbed at the sight of Ravan's power than a lion would be in the midst of elephants. Jai Shri Ram. Jai Shri Ram. Thank you very much, Molly Didi, Ray Bhaiya, and Nivasha. So we have stopped at Doha 20 of the Sundarkand. I will now ask Kiran Punwasi to please do 2 verses. Thereafter, Auntie Dan and Divash to please do 3 verses. And I request Mala Ramprasad to please do the summary for that section. Thank you. जय श्री राम। मंगल भवन मंगलहारी राम लक्ष्मण जानकी द्रवहु सुदशरथ जिर बिहारी जय बोलो हनुमान की। कहा लंकेश कवन ते कीसा
के ही केवल गल ही बन कीसा, की दो श्रवण सुनहि नहीं मोही, देखहु अति असंक सत तोही। मारे निसीचर के ही अपराधा, कहु सत तो ही न प्राण के ही बाधा। सुनु रावण ब्रह्मंड निकाया, पाही जासु बल बीर चिति माया। जाके बल बिरंचि हरि ईशा, फलत सृजत हरत दस सीसा। जो बल की जो बल शीस धरत सहसानन, अंडकोश समित गिरि कानन। डरहि जो विविध देह सुर त्राता, तुम से सतन सिखवनु दाता। हर को दंड कठिन जहि बंजा, तेहि समेत निप्रदल मद गंजा। कर दूषण त्रिशिर रुबाली, बाद सकल अतुलित बलशाली। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जाके बल लवलेश ते, जितहु चराचर झारी। तासु दूत में जाकरी, हरि अनेहु प्रिय नारी। मंगल भवन मंगलहारी, राम लक्ष्मण जानकी। द्रवहु सुदशरथ जिर बिहारी, जय बोलो हनुमान की। जनहु में तुम्हारी प्रभुताहि, सहस बहु सन पारि लराही। समर बाली सन करि जसु पावा, सुनि कपि बचन बिहसी बिहरावा। कायहु पल प्रभु लागी बूका, कपि भवते तोरे हुरुका। सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारहि मोहि कुमार गगामी। जिन मोहि मारा ते में मारे, तेहि बर बदेहु तनय तुम्हारे। मोहि न कछु बदेहि कहीं लाजा, किन्न चहु निज प्रभु कर काजा। बिनती करहु जोरी कर रावण, सुनहु मन तजि मोर सिखावन। देखहु तुम निज कुल की बिचारी, ब्रह्म तजी बजहु भगत बेहारी। जाके दर अति कल दराही, जो सुर असुर चराचर खाही। तासो बयरु कबहु नहीं कीजय, मोरे कहे जानकी दीजय। मंगल भवन मंगलहारी, राम लक्ष्मण जानकी। द्रवहु सुदशरथ जिर बिहारी, जय बोलो हनुमान की। प्रणात पल रघुनायक, करुणा सिंधु करारी। गए श्रवण प्रभु राखिए, तब अपराध बिसारी। जय श्री राम। Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram, Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram, Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram, Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram.
राम चरण पंकज उर धरियो लंका चल राजू तुम करहु ऋषि पुलस्त्य जासु विमल भयंका तेहि सासी महु जन हो कलंका राम नाम वीना गिरन सोहा ते कुविचारी त्यागी मद मोह पसन हीन नहीं सोहा सुरारी सब भूषण भूषित बर नारी राम विमुख संपत्ति प्रभुताई जाई रही पाई बिनु पाई सजल मूल जीना सरिता नाही परसी जगे न पुनी तबहि सुखाई सुनु दस कंत कहू पन रोपी विमुख राम तात नई गोपी शंकर सहस विष्णु अज तोहि सकहि नरा कि राम कर दोहि राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम मुह मूल बहुसूल प्रद त्यागु तम अभिमाना भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवाना राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम यद्यपि कहे कपि अति हित बानी भगति विवेक विरति नहीं सानी बोल बिहासी महाअभिमानी मिला महाई कपि गुरु बद ज्ञानी मृत्यु निकट अहिक अकाल तोहि लागे सि अदम सिकावन मोहि उलत होहि कहा हनुमान मति ब्रह्मा तोरि प्रगत में जाना सुनि कपि बचन बहुत किसियाना तेगी न हरहु मुद कर प्राण सुनत विनिशाचर मारन दाई सचिवान सहित विभीषण आई ने नाई शीस कारी बिनय बहुत नीति विरोध न मैर दूत आन दंदुका चुकार्य गोसाई सब ही कहा मंत्र बल बाई सुनत विबसी बोला दस कंदर अंग भंग कापी पतई बंदर जय जय राम श्री राम जय राम कपि के न ममता पुंच सार सब ही कहू समुझाई तेल बोरी पत बंदी पुनि पवक देहु लगाई श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम पूछहीन बानर तन जाहि तब सत निजे नाही
लही आई जिनके किन हसी भातु बधाई देखे हूँ मैं तिनका के प्रथाई बचन सुनत कवि मान मुस्काना भाई सहाय श्राद्ध में जाना जातु दसन सुनि रावण बचना लागी राच ही मुद सोही रचना रागना नागर बसन गृत तेला भते ही पूछ ही कीन कपिकेला कौटक क्वाम आय प्रभु साई मारहि चरण करे बहु साई भाजन ही बोले देहि सब तारी नगर पेरे पुनि पूछे ही प्रजारी पावक जरत देखी हनुमंता भाई प्रणाम लाग रूप तुरंता नीबू की चले हो कपी कान का अठार भाने सब ही निसीचर नारन श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम हरि प्रीत ते ही असवार चले मारुत 49 अठ साहिकारी गरजे कपि बदि लागे आकाश सियावर रामचंद्र की जय शरणम शंकर हरिओम। Jai Shri Ram. Ravan was annoyed by the sight of Hanumanji's boldness. He wanted to know who Hanumanji was and where did he get the strength to destroy his orchard and kill so many of his warriors. He asked Hanumanji if he had not heard of his name and power and if he was not afraid of losing his life. Hanumanji replied that he was an envoy of the Lord, by whose might Maya brings forth numberless universes, by whose might Brahma, Vishnu, and Shiva carry on their respective function of creation, preservation, and destruction, by whose might Shesh, the thousand-headed serpent, supports on his head the entire globe with its mountains and forests, who assumes various forms in order to protect the gods and teach a lesson to the wicked, who broke Shiva's unbending bow and crushed with it the pride of a host of princes, who killed Kar, Dushan, Trishir, and Bali, all unequaled in strength and by an iota, of whose might he, Ravan, was able to conquer the entire creation, both animate and inanimate, and whose beloved spouse had been stolen away by Ravan. Then, in reply to the question of whether Hanumanji was aware of Ravan's glory, Hanumanji replied that he knew of Ravan's encounter with Sahasrabahu and Bali. These were instances of Ravan's defeats and failures, and were intended to remind Ravan of his own vulnerability and shortcomings. But Ravan laughed away the words of Hanumanji. In reply to Ravan's question as to why he destroyed the orchard and killed the demons, Hanumanji replied that he ate the fruit because he was hungry, and he used the uprooted trees to kill the demons in self-defense, since they had attacked him first. Hanumanji said that he was not ashamed of being bound and captured by Meghnad, keen as he was to serve the cause of his lord. Hanumanji told Ravan never to antagonize the Lord, who is a source of terror even to Yamraj, the god of death, who devours all created beings, both animate and inanimate, gods as well as demons. And he asked Ravan to return Mother Sita to the Lord. He said, Lord Sri Ram, the slayer of Kar, is a protector of the suppliant and an ocean of compassion.
Forgetting your offenses, he will give you shelter if you but turn to him for protection. Install the image of Sri Ram's lotus feet in your heart and enjoy the uninterrupted sovereignty of Lanka. The fortune and lordship of a man who is hostile to Sri Ram eventually leave him, even if they stay a while, and are as good as lost if acquired anew. Rivers that have no perennial source get dried up as soon as the rains are over. Listen, Ravan, I tell you an oath. There is none to save him who is opposed to Sri Ram. Shankar, Vishnu, and Brahma in their thousands are unable to protect you, an enemy of Sri Ram. Abandon pride and adore Sri Ram, who is an ocean of compassion. Although Hanumanji gave him exceedingly salutary advice, full of devotion, discretion, dispassion, and wisdom, the most haughty Ravan laughed and mockingly said, "We have found a most wise guru in this monkey." Then turning to Hanumanji, he said, "Death hangs over your head, O wretch. That is why you have started extorting me, O vile monkey." Ravan then ordered his soldiers to kill Hanumanji. As the demons rushed forward to do so, Vibhishan came in with his counselors. He pleaded to Ravan that it was against all statecraft to kill an envoy, and that he may be punished in some other way. When the other ministers exclaimed to each other that this was sound advice, Ravan laughed and said, "All right, monkey. All right, the monkey may be sent back mutilated. A monkey is very fond of his tail. Therefore, wrap his tail with rags soaked in oil and then set fire to it." Hanumanji smiled to himself when he heard the words of Ravan. The demons carried out Ravan's command and wrapped more and more rags soaked in oil as Hanumanji playfully grew his tail longer. The, the citizens thronged to see this fun. They kicked Hanumanji and jeered at him. With beating of drums and clapping of hands, they took him around the city and then set fire to his tail. When Hanumanji saw the fire blazing, he immediately assumed a diminutive size and, slipping out of his bonds, sprang to the attics of the gold palace to the dismay of the demons. At that moment, impelled by God, all the 49 winds began to bluster. Hanumanji roared with a loud laugh and swelled to such a size that he seemed to touch the sky. Jai Shri Ram. Jai Shri Ram. Thank you very much, Kiran, Auntie Dan, and Divash, and also Malapua. We stopped at Doha 25. I will request Shamila Behan to please recite 2 Dohas. Thereafter, Hemant and Prishi Bhaiya, please do the next 3. And Shivash Haricharan, please read the summary for that section. Thank you. जय श्री राम। हरि प्रेरित ते अवसर चले मारुत उनचास, अट्टहास करि गर्जा कवि बरि लाग आकाश। सियावर रामचंद्र की जय, शरणम शंकर हरि ओम। जय सिया राम जय राजा राम, जय राधे श्याम जय सीता राम। जय हनुमान बोलो जय हनुमान, जय हनुमान बोलो जय हनुमान। देह विशाल परम हरु आई, मंदिर ते मंदिर चरधाई। जरहि नगर बालोग बिहाला, जपट लपट बहु कोटि कराला। तात मातुहा सुनिय पुकारा, एहि अवसर को हम ही उबारा। हम जो कहा यह कपि नहीं होही, बानर रूप धरे सुर कोही। साधु अवज्ञा कर मल ऐसा, जरहि नगर अनाथ कर जैसा। जारा नगर निमिष एक माही, एक विभीषण कर गृह नाही। ताकर दूत अनल जेहि सिरजा, जरा न सो तेहि कारण गिर जा। उल्टा पलटी लंका सब जारी, कूदि पड़ा पुनि सिंधु मजारी। जय सिया राम जय राजा राम, जय राधे श्याम जय सीता राम।
पूछ बुझाई कोई श्रम, दरी लघु रूप बहोरी। जनक सुता के आगे, ठाड बयहु कर जोरी। जय जय हनुमान, जय जय हनुमान, जय जय हनुमान, जय जय हनुमान। मातु मोहि दीजे कछु छीना, जैसे रघुनायक मोहि दीना। चूड़ामणि उतारी तब दयहु, हर्ष समेत पवन सुत लयहु। कहु तात अस मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा। दीन दयाल बिरदु संबारी, हरहु नाथ मम संकट बारी। तात सख्र सुत कथा सुनायहु, बान प्रताप प्रभु ही समुझायहु। मास दिवस महु नाथ न आवा, तो पुनि मोहि जिहत नहीं पावा। कहु कपि केहि विधि राखो प्राणा, तुमहु तात कहत अब जाना। तो ही देखि शीतल ही बही छाती, पुनि मोह कहु सोहि दिन सो राती। जय जय हनुमान, जय जय हनुमान, जय जय हनुमान, जय जय हनुमान। जनक सुताई समुझाहि करी, बहु विधि धीरज दीन। चरण कमल सिरु नाहि कपि, कवन राम पहि कीन। सियावर रामचंद्र की जय, शरणम शंकर हरि ओम। जय श्री राम। जय श्री राम। राम मंगल पवन मंगल हारी राम। राम प्रभु दशरथ बिहारी राम। राम मंगल पवन अमंगल हारी राम। राम प्रभु दशरथ अजर बिहारी राम। चलत महतुनी कर जैसी बारी राम। राम गर्भ सर्वाई सुनी निशिचर नारी राम। नागी सिंधु एहि पर ही आवा राम। सब निकलिका कपि न सुनावा राम। किलो की हनुमान राम। नूतन तन जन्म कपि न तब जाना राम। राम मुख प्रसन्न तन तेज विराजा राम। किन सी रामचंद्र कर काजा रामा। मिल सकल अति पाई सुखारी रामा। राम तल पात कीन भारी रामा। राम चले हर्ष रघुनायक पासा रामा। राम पूछत कहत नवल इतिहास रामा। राम तब मधुबान भीतर सब आही रामा। राम अंग समत मधुपल खाई रामा। रखबारे जब भर जन रागे रामा। राम मुष्टि पर हार हनत सब बागे रामा। राम मंगल भवन अमंगल हारी रामा। राम जब दशरथ अजर बिहारी रामा। राम मंगल भवन अमंगल हारी रामा। राम दशरथ अजर बिहारी रामा। जय पुकारे त सब बन उजाड़ जुबराज। सुनी सुग्रीव हर्ष कपि करि आई प्रभु काज। राम मंगल भवन मंगल हारी राम। राम प्रभु दशरथ अजर बिहारी राम। राम मंगल भवन मंगल हारी राम। राम प्रभु दशरथ अजर बिहारी राम। जाओ न होती सीता तुनि पाही रामा। राम मधुबन के पाल सकाई के खाई रामा। राम हे विधि मन विचार कर राजा रामा। राम आई गाई कपि सहित समाज रामा। राम आई सबानी नाव पद शिष रामा। राम मिले उस बनी अति प्रेम कपीसा रामा। राम पूछी कुशल कुशल पद देखी रामा।
राम राम कृपा बाब काजू बिसेकी राम राम नाथ काजू कीनी हनुमान राम राम राखे सकल कपीन के प्राण राम राम सुनी सुग्रीव बौरी तेहि मिलो राम राम कपीन सहित रघुपति कई चलो राम 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 कपीन जब आवाज देखा राम राम किए काजु मन हर्ष विषेक राम राम पथिक शिला बेट जो भाई राम राम परे सकल कपि चरणी राही राम राम मंगल भवन अमंगल हारी राम ओ राम प्रभु दशरथ अचर बिहारी राम राम ओ मंगल भवन अमंगल हारी राम राम प्रभु दशरथ अचर बिहारी राम प्रीति सहित सब बीते रघुपति करुणा पुंज पूछी कुशल नाथ अब कुशल देखी पद खंज राम हो मंगल पवन अमंगल हारी राम राम गबहु दशरथ अजर बिहारी राम राम हो मंगल भवन अमंगल हारी राम राम गबहु दशरथ अजर बिहारी राम राम चंत सुन रघुराय राम राम जपर नत करहु तुम जाया राम राम तहई सदा सुख कुशल निरंतर राम राम सुर नर मुनि प्रसन्नता उपर राम राम सोई बिचाई विनय गुण सागर राम राम तासु सुच सूत्र लोक उजागर राम राम प्रभु की कृपा भयहु सब काजु राम राम जन्म हमार सफल आजो राम राम नाथ पवन सुत कीनी जो करनी राम राम सहस मुख न जाई सो परानी राम राम पवन तनय के चरित सुनाई राम राम जामवंत रघुपति सुनाई राम राम सुनत कबीर मन अतिमाय राम राम पुनि हनुमान हर्षि लाई राम राम कहो तात की बाती जानकी राम राम रहते करते राज स्वर्ण राम राम मंगल भवन अमंगल हारी राम राम बहुत रस रथ जारी जारी राम राम मंगल भवन अमंगल हारी राम राम बहुत दशरथ अजर बिहारी राम नाम पर बसनि से ज्ञान तुम्हार कपाट लोचन निज पर जंत्रित जाहि प्राण के ही बात पर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय 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 श्री राम जय श्री राम Though colossal in size, Hanumanji appeared most nimble-bodied as he ran and sprang from palace to palace. The city was all ablaze, and the demons were at their wits' end. Terrible flames burst forth, and piteous cries were heard everywhere. In the twinkling of an eye, Hanumanji burnt down the whole city. With the exception of Vibhishan's house, every building was ablaze. Hanumanji went unscathed because he was the messenger of who created fire itself. He burnt the whole of Lanka from one end to the other and then leaped into the ocean. After extinguishing his tail and relieving his fatigue, Hanumanji resumed his diminutive form and stood before Mother Sita with joined palms. He said, "Be pleased, Mother, to give me some token such as the Lord of the Raghus gave me." She thereupon unfastened her crest jewel and gave it to Hanumanji, who gladly received it. She asked Hanumanji to convey to the Lord the message that even though he was all sufficient, yet because of his vow
of kindness to the afflicted, he must relieve her of her grievous distress. Furthermore, she asked Hanumanji to convey to the Lord that if he did not arrive there within a month, he will not find her alive. After entrusting this message to Hanumanji, Mother Sita then expressed her pain of being left alone again after Hanumanji leaves. Hanumanji reassured Mother Sita and consoled her in many ways. He bowed his head to her lotus feet and set forth to meet Sri Ram. Taking a leap across the ocean, he reached the opposite shore and greeted his companions with a shrill cry of joy. They were all delighted to see Hanumanji and felt as if they had been born anew. He wore a cheerful countenance, and his body shone with a brilliance which left no doubt in their minds that he had completed his mission. Then they gladly proceeded to Kishkinda. On their way, they all entered Sugriva's orchard called Madhuban, and with Angad's consent began to eat the luscious fruit. When the guards interfered, they were beaten with fists till they took to their heels. The guards approached Sugriv and complained that Angad and the others were laying waste the royal orchard. Sugriv rejoiced to hear this, for he concluded that they must have accomplished their mission. He thought if they had failed to get any news of Mother Sita, they could never dare to eat the fruit of Madhuban. While Sugriva was thus musing, they all arrived there and bowed their heads at his feet. Sugriva learnt from them that it was Hanumanji who had accomplished everything. Sugriva embraced Hanumanji again and again, and he took them all to where Sri Ram was sitting with Lakshman on a crystal rock. When Sri Ram saw them approaching, he knew immediately that their mission had been duly accomplished. He met them all cordially. Then Jambavan related to Sri Ram the charming exploits of Hanumanji, and the all-merciful Lord felt much delighted at heart to hear them. In his joy, Sri Ram embraced Hanumanji and asked him, "Tell me, dear Hanuman, how does Sita pass her days and sustain her life?" Hanumanji replied, "Your name keeps watch night and day, while her continued thought of you acts as a pair of closed doors. She has her eyes fastened on her own feet. Her life thus finds no outlet whereby to escape." Jai Shri Ram. Jai Shri Ram. Thank you very much, Shamila Behen, Hemant and Brishi Bhaiya and Shivash. We stopped at Doha 30. I'll request Bhim Bhai to do 2 verses. Thereafter, Rakesha, please do the next 3. And Chiman Morar, please read the summary for that section. Thank you. Jai Shri Ram. Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. Chalat mohi Chudamani dinhi Raghupati Hriday Lai Soilinni Nath Jugal Lochan Bari Hari Vachan Kahe Kachu Janak Kumari अनुज समेत कहु प्रभु चरना दिन बंधु प्राण प्रणातारति हरना अनुक्रम वचन चरण अनुरागी कई अपराध नाथ हौ त्यागी अवगुण एक मोर में माना विचुरत प्राण नाकिन आ प्याना नाथ सो नयनी को अपराधा निसरत प्राणक करही अति बाधा पिरा अग्नि तनु तूल समीरा श्वास जरई चन माही शरीरा नयन श्रवई
चलु निज हित लागी, चरई न पाव तेह विरहा गी। सीता के अति विपति विशाला, पिनहि कहे भले दीन दयाला। निमिष निमिष करुणा निधि, जाहि कल्प समबीति। बेगी चलिया प्रभु आनिया, भुजबल थल दल जीती। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सुनि सीता दुख प्रभु सुख तय नाम, पर्याये जल राजीव नय नाम। वचन काय मन मम अति जाई, सपन बुझिया विपत्ति की नाई। हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। खेती के बात प्रभु जातु दान की, रिपोहि जीति आनी वी जान की। सुनु कपिते ही समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी। प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होई न कहत मन मोरा। सुनु सुत तोहि पुरिन में नाहि, देखऊ करी विचार मन माही। पुनि पुनि कपहि चितव सुर त्राता, लोचन नीर पुलक अति गाता। सुनि प्रभु वचन विलोकी, सुख कात हर्षि हनुमंत। चरण परऊ प्रेमाकुल, त्राहि त्राहि भगवंत। जय श्री राम। पवन सुत हनुमान की जय। शंकर हरि ओम। जय श्री राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बार बार प्रभु चहि उठावा, प्रेम मगन तेहि उठब न भावा। प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुमिरि सुदशा मगन गौरीसा। सावधान मन कर पुनि संकर, लागे कहन कथा अति सुंदर। कपि उठाई प्रभु हृदय लगावा, करगहि परम निकट बैठावा। कहु कपि रावण पालित लंका, केहि विधि दहेहु दुर्ग अति बंका। प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला वचन विगत अभिमाना। साखा मृग के बड़ी मनुसाई, साखा ते साखा पर जाई। नाघि सिंधु हाटक पुर जारा, निशिचर गण बिधि विपिन उजारा। सो सब तब प्रताप रघुराई,
नात न कछु मोरी प्रभुताई। ताकहु प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल। तब प्रभाव बरवान रहे, जारि सकहि खलु तोल। नाथ भगति अति सुखदायनी, देहु कृपा करी अनपायनी। सुनि प्रभु परम सरल कपिबानी, एवमस्तु तब कहेहु भवानी। उमा राम सुभाहु जेहि जाना, ताहि भजनु तजी भावना आना। यह संवाद जासु उर आवा, रघुपति चरण भगति सोई पावा। सुनि प्रभु वचन कहहि कपि वृंदा, जय 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 कृपाल सुख कंदा। तब रघुपति कपीपति ही बुलावा, कहाँ चले कर करहु बनावा। अब विलंबु के ही कारण कीजय, तुरत कपिन कहूँ आय सुदीजे। कौतुक देखी सुमन बहु बरसी, नभते भवन चले सुरहर्षि। कपिपति बेगी बोलाए, आए जूथप जूथ। नाना बरन अतुल बल, बानर भालु बरूथ। प्रभु पद पंकज नावहि सीसा, करजहि भालु महाबल कीसा। देखी राम सकल कपिसेना, चितई कृपा करी राजव नैना। राम कृपा बल पाई कपिंदा, भये पच्युत मनहु गिरिंदा। हर्षि राम तब कीन पयाना, सगुन भय सुंदर सुभनाना। जासु सकल मंगल में कीर्ति, तासु पयान सगुन यह नीति। प्रभु पयान जाना वै देही, हर की बामंग जनु कहि देही। जोई जोई सगुन जान कहि होई, असगुन भयहु रावण ही सोई। चला कटकु को बरने पारा, गरजहि बानर भालु अपारा। नक आयुध गिरी पादप धारी, चले गगन मही इच्छाचारी। के हरिनाद भालु कपि करही, डगमगाई दिग्गज चेकरही। चेकरहि दिग्गज डोल महिगिरि, लोल सागर घर भरे। मन हर्ष सब गंधर्व सुर मुनि, नाग किन्नर दुख टरे। कट कट ही मरकट बिकट भट बहु कोटि कोटि न धावही। जय राम प्रबल प्रताप कौशलनाथ, गुण गण गावही। सही सकन भार उधार, अहिपति बार बारहि मोहहि। गह दसन पुनि पुनि कमट पृष्ठ, कठोर सो किमि सोहहि। रघुबीर रुचिर प्रयाण प्रस्थिति,
जानी परम सुहावनी जनु कमट खप्पर सर्प राज सोलिकत अबिचल पावनी एहि विधि जाय कृपा निधि उतरे सागर तीर जह तह लागे खान फल भालु विपुल कपिवीर। जय श्री राम। Jai Shri Ram. Shri Ram asked Hanumanji how Mother Sita sustained her life in Lanka. In reply, Hanumanji said, "Your name keeps watch night and day, and her continued thought of you acts as a pair of closed doors. Her life finds no outlet